चाय नाश्ता On हो a गया recording. सब, हम स्टार्ट Yeah. करते हैं. So, good evening, sir. Thank you for coming again. Guys, welcome to Honest Astrologer. And today we're going to discuss something that Mr. Vijay loves absolutely the most, and that is moon. And a lot of people are extremely curious about what moon brings into a life. So, sir, I'll start with what's the importance of moon in a birth chart? Okay, Divya, first of all, thank you for saying that I love this planet because many people think I hate it and I've criticized Moon a lot. In my last video, Dark Side of the Moon, I've given all the wrong things about Moon. Got hit for the next 4 or 5 days. Moon Devta became angry. Today, I'll talk about the bright side of Moon. Okay. So, Moon, you know, if I could choose one planet which would be good in my chart, I would always choose Moon. You might know somebody who is very lukewarm in life, कुछ बहुत ज्यादा किए नहीं, not very rich, not very successful, but they are so much at peace with themselves. They have a decent life, जितना है उसमें खुश हैं वो. These people may not have a great Rahu or a great Shani, but they almost always have a good moon. On the other end, you have these billionaire businessmen and sports people and film stars and politicians. डिप्रेशन में है, ड्रग्स ले रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, अल्कोहल अब्यूज में. So that is when every planet is supporting you except the moon. If the moon is not helping you, you become a Michael Jackson. सब कुछ है, दुनिया दीवानी है, बट वो आदमी को चैन नहीं, कुछ ना कुछ उसको लगी रहती है. So that is why moon is very important. One of my mentors taught me कि परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, मनस्थिति is more important. If you remember, हम लोग school college time में maybe we weren't this affluent or this powerful or this connected, but we were happier. मन में एक खुशी रहती थी, एक उत्साह रहता था. That is what a moon does. So, it keeps you internally happy and content and just in a Yes, blissful situation. A yes. good moon And in your the chart. first thing, you don't panic. Okay. You go to a Cancer moon and see how the person panics. Vis-a-vis a Taurus moon, वो chilled out रहेगा, देख लो. We'll come back to the signs. Right. So a good moon is a blessing from the gods. Yeah. Brilliant. How about you share a story of gods having a good Yeah. So the most underrated aspect of moon, everybody knows it's the karaka of a mother and it is karaka of mind and everything. What people do not understand or do not appreciate is moon is the defender. Okay. We have had two great avatars, Ram and Krishna. Both of them had moon in the first house. No Shani, no Guru, no Shukra, nobody. Moon in the first house. Krishna had moon Ketu according to some horoscopes. And that makes sense. But the emphasis was on moon. He had an exalted moon. Ram was a double Cancer, Lagna Karka Chandrama, but he was the greatest warrior of all times. Krishna wasn't fighting the Mahabharat war. Ram was in the thick of the action, right? As much as I have a bias towards Krishna, Ram was in the thick of the action and he was the Ati Maharathi. There have been only two in the world, Meghnad and Raja Ramchandra. Even Ravan wasn't an Ati Maharathi, according to some scriptures. So the greatest warrior we ever had a very strong moon. He was a double moon person. He had a tragic life and all that. But they wanted to defend people against adharma. Right? Mars will go to war for anything. Sun will go to war for ego. Shani will go to war for justice. Chandrama goes to war in order to protect, in order to defend the weak, in order to save those who are suffering. So that is how important the warrior side of moon is. Pushya Nakshatra is considered a Kshatriya Nakshatra. Why? Because Pushya people, they want to defend.
some of the most patriotic people you will find with a heavy moon or a heavy Cancer. So Chandrama has its own bright sides if you know how to tap them. And worshipping Ram and Krishna is a very good way of calming down your mood. Of course, Shiva to Lord hai. Yeah. So in modern times, as they say that some people are just very calm and they don't deal with a lot of anxiety. So is this the reason why? Because they have a beautiful moon in the sitting in their chart, maybe how Yeah, Ram and Krishna had it yeah, in their chart, despite all the wars, all the troubles, they just are stay put in peace. yeah. So Ram wasn't so much at peace. Okay, there are mentions where he cried, got angry. He was very much in his emotions. He was a double Cancer. Krishna was the guy absolute in control. वो आदमी महाभारत में से रथ निकाल के चला गया. And that's a Taurus moon that he That's has. a We'll come Taurus. back. We'll go to it eventually. कितना कितना भी कलेश मचा हो वो रथ निकाल के चला गया. And when Abhimanyu died, Arjun fainted. Krishna was still thinking कि करना क्या. और अर्जुन ने जाके मैं इसको कल तक मार दूंगा और सारी शपथ है बदले के लिए. एंड कृष्णा was sitting calm calculating यार ये पंगा तो ले लिए करेंगे कैसे. So And always Taurus Moon, smiling and always at peace, right? yeah, Like yeah. no antidepressants, no anti-anxiety, all chill in your heart. And if you look at his story, okay, this was a man who had a string of tragedies one after the other. People Absolutely. say Karn is a tragic hero. I find him an egomaniac. Karn is an evil egomaniac. Krishna is a tragic hero. वो छाती नहीं पीटते हर जगह हाय मेरे साथ ऐसा हो गया. That's the beauty. That is why कृष्णा के मंदिर हैं इतने सारे. कर्ण का कहीं एक आध दो गलती से हैं. I don't consider Karn a hero. It's Krishna who is the real hero. So this is very interesting. So, sir, now that we've spoken about the importance of moon, what does a good moon do to a person in a chart? When you look at charts, you can identify that this is a rock solid moon. अगर और भी planets अच्छे नहीं है तो. बट एक अच्छा स्ट्रॉन्ग चंद्रमा आपके चार्ट में आपकी पर्सनालिटी को, आपके बिहेवियर को, टेम्परामेंट को, स्वभाव को कैसा बनाता है? Okay, okay. So I'll talk about 3 signs and 2 combinations. Okay. We'll come to the combinations. Sorry, I'm अच्छा, cutting you off. नहीं, But ठीक है. just But when you generic say temperament, good क्या traits Chandrama, देता है अच्छा मून? देखो again there are different types of अच्छा moon. You can't categorize an अच्छा moon. A Taurus moon is an अच्छा moon. A Sagi moon is my second favorite. Okay. And these two are chalk and cheese, very different people. Taurus moon is very calm and collected, like a strong bull who is emotionally very centered. Until unless they have very rough charts, these people are emotionally very centered, very calm, very collected, and they don't panic. दूसरी चीज क्या होता है, they do not let their emotions overwhelm them. ये emotions पे काबू रख के चलते हैं. Have you seen a bull? वो कितना स्टर्डी लगता है, यू लगता है कि गड़ा हुआ वो जमीन पे. ट्रैफिक दाएं बाएं से जाएगा, वो खड़ा हो बीच में खड़ा रहेगा. Okay, so that is how sturdy a Chandrama is when he is in Taurus, because Chandrama is a water planet. हिलता रहता है, घटता बढ़ता रहता है, very chaotic. But when it is in a place which is very solid, sturdy, imagine water capped in a very strongly grounded, मतलब ground में ही बना हुआ बर्तन है, उसके अंदर रखा, वो गिर नहीं सकता. Okay. So few qualities, they are very calm and quiet. Number one thing I love about these people, they never panic. कुछ हो जाए, they never panic. बुरे से बुरे हालात में they are the ones who's taking care of everybody. अरे तुमने खाना खाया, तुमने वो किया, पता लगा एक्सीडेंट हो गया, इनका खुद का हो गया, they will be worried about तुमने खाना खा लिया, अच्छा वो डॉक्टर को बताता मेरा ब्लड ग्रुप है. They don't panic. So people with a solid moon in the chart, we'll go back, we'll come to different signs that they sit in. But you're saying जिनका चंद्रमा अच्छा होता है, they're calm and collected people. They don't panic too much. They don't panic, और ये negativity नहीं होती इनमें बिल्कुल. All the negativity and depression you will find with the weak Chandrama. Okay. Negativity नहीं होती है.
और ये अपने इमोशंस के कंट्रोल में रहते हैं, डरते नहीं जल्दी। व्हाट एल्स? Okay. So that's how that's the importance of a strong moon in a chart. Let's move to some of your favorite the signs that you consider a moon extremely strong in. So let's look at three signs that you consider it extremely strong in, and what are the traits that you've usually noticed on signs So mein. Taurus, like I have already discussed, it's a very sturdy, solid sign. Your Chandrama is as secure as a bull. So these people are very secure. They never panic, and they can be often stubborn, but for the right reasons. उसके बाद में emotionally they are very loyal. Okay. Interesting. Uh, Taurus moon very rarely cheats. Okay. They have very big hearts. और ये उसमें होता है जो होगा देखा जाएगा टाइप्स. I'll give you an example. गदर में तारा सिंह था. He was a Taurus. Copybook Taurus, possibly a double Taurus. He is a very sweet guy until unless you rub him the wrong way. वो बेचारा कागज लेके घूमता रहेगा. He wouldn't panic कि ठीक है ये कर दो. वो बोले नहीं लगेगा. बोले ठीक है कागज पे मोहर नहीं लगे तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा. So he is very calm and collected till the time is pushed to a point. वो गुस्सा आ गया फिर वो हैंड पंप भी उखाड़ेगा. That man was typical Taurus and he loved to sing as well. Truck driver और था. Okay. So very simple guy, very simple life. Life में बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. Very content. But if you push him the wrong way, there is hell to pay. और टॉरस मून को दुनिया की दिक्कतों को सॉल्व करने में भी बड़ा मजा आता है. Everybody's problem is my problem. नहीं. That's Karka Chandrama. That's Karka Chandrama. Taurus Moon, if you go to him, he'll help you. Okay. If you are in his inner circle, he'll help you. I have a very, very close friend. Okay. And these people know how to emotionally heal themselves. That's a very important point. So he's like, यार मेरी पत्नी और मेरी माता में झगड़ा हो गया. Okay. And I was like, फिर तूने क्या किया? बोला सबसे पहले तो मैंने कहा मुझे पैनिक नहीं होना है. सो मैंने हिसाब लगाया कि 1 bottle of beer पर झगड़ा. He also have a heavy Pisces. तो वो गया मस्त दारू वारू पी के सोया. सुबह उसने दोनों की मीटिंग रखा दी. And he sorted it out. So these people, they don't panic. They know कब क्या कैसे करना है. And they do not let other people panic. Okay. If you are in a room where everybody is panicking, एक आदमी शांत खड़ा रहेगा तुम ये कर लो अच्छा ऐसा कर लो. These people would typically have a Taurus moon. बट उनको आपको बुलाना पड़ेगा भाई साहब टेक चार्ज. वरना सबसे आगे सूर्य मंगल वाले खड़े होते हैं. But it's when everything is in panic, everything is in chaos. It's the Taurus moon that pulls things through. Okay. And how much if the moon is afflicted by, or if the moon and sun are together? That's a different discussion. वो थोड़ा जो है ना बदल देता है. If हाँ. and God forbid if moon is with Rahu, then you have a psychopath at your hands. तो वो अलग story है. Because I'm a Taurus moon, but my moon is with the sun. Sun तो वो पूरा story गड़बड़ हो गया. That's a So, different thing. Yeah. so this is Because only applicable for yes, people this is जिसका moon अकेले है. Akela moon. This is Akela moon. Because whenever you throw something, you throw a Mars, you have a very strong guy. Yeah. You throw a Jupiter, you have a very secure guy, very shana guy who will work his way out. You throw a Rahu, and you have tufan aa gaya. You have a depressive person. You throw a Shani, he becomes very negative. You throw a Ketu, he becomes anxious. So वो अलग चीजें होती है. सारा केमिस्ट्री अलग है. अभी हम इकलौते मून की बात कर रहे हैं. हम इकलौते टॉरस मून की बात कर रहे हैं जिनका जन्म कुंडली में in their birth chart they have a moon in the Taurus Rashi. Yes. Sitting Akela. alone. Yes. Akela. Yes. Okay, brilliant. Second favorite I have is Sagittarius. Oh, lovely. Okay. So Sagittarius, I call it the balle balle sign. Okay. It is the happiest sign of all. So Chandrama needs happiness. Okay. Chandrama needs sturdiness. So ये लोग इतने sturdy नहीं होते. Sturdy वाला इलाका वो टॉरस का है. These people are ridiculously positive. ये नेगेटिव Over optimistic. नहीं है. जरूरत से ज्यादा. पॉलियाना.
और इनका क्या है, ज्यादा सिरदर्दी होगी तो ये भाग जाएंगे. टॉरस विल स्टे एंड फाइट. सेजिटेरियस वुड एस्केप. अरे कौन माथा लगा, छोड़ो. घूमते बहुत है. दे ट्रैवल अ लॉट. ओके. एंड ऑफन इनको किस्मत पे बहुत भरोसा होता है, भाग्यवादी बहुत. तो Destiny believers. हाँ हाँ हाँ, आप कभी किसी भी कैसीनो में जाओ, भरे पड़े होंगे सेजिटेरियस हैवी पीपल. जुए का साइन है. सबसे बड़ा कलेजा दुनिया में होता है जुआरी का होता है. Because he is willing to suffer the consequences and the anxiety. I can Yes. bet my bottom dollar you will not find a Cancer moon or a Taurus moon in a casino. It's a Sagittarius moon gambling away. Yeah, Sagittarius, Aries, Leo, कभी कभी Scorpio, but only these 3 4. But इनको तुम शेयर मार्केट में बहुत पाओगे. इनको तुम ट्रैवल करते बहुत पाओगे. They are very happy traveling. Taurus doesn't like to travel. Sagittarius gets depressed if they don't travel. Yeah. एंड बेस्ट पार्ट इज, जब सारी दुनिया नेगेटिव होती है, ये अपना अलग ही पॉजिटिव ढपली बजा के साथ वालों को भी खुश कर देते हैं. माय फादर हैज दिस, एंड इफ ही वुड लूज हिज जॉब ही वुड थ्रो अ पार्टी. Breakup party type. हाँ हाँ, ब्रेकअप पार्टी, जॉब लॉस पार्टी, पंगा हो गया पार्टी. सो ridiculously positive people, and they often they find happiness. Sagittarius moon somehow will find happiness. वो थोड़ा छूछा करेंगे, but they will again get into a बल्ले बल्ले mode. So I absolutely love a Sagi moon. So, which actor, celebrity, I think people really relate to celebrities, have a Sagittarius, or which public figure has a Sagittarius? Uh, Ratan Tata has. Oh, lovely. Ratan Tata is a very heavy Sagittarius. He has a Sagittarius ascendant and the Sagittarius sun. I mean, look at the kind of risks that man would take. Okay, the kind of positivity he would bring, the kind of money he would throw. Okay, he could have given 50% compensation of that Taj attack वाला people. वो लोग अपने एम्प्लॉइज को नहीं देते, उसने बाहर बैठे चाय वाले तक को दिया. Correct. बिग हार्ट्स, पॉजिटिव. Yeah. और वो आज तक लगा हुआ आदमी, और उसका बिजनेस भी समाज सेवा ज्यादा है, बिजनेस कम है. और उनकी personality में reflection है positivity की. Like you look हाँ. at Ratan Tata and it just feels very calm. Yeah, he's a still, despite no family, nothing, he's a happy man. हाँ, he has son in the first. वो दिखता है कि बादशाह है. Yeah. ठीक है ना, वो is so handsome, but Yeah. he has a heavy Sagittarius, and that keeps him very centered, very grounded. Yeah. तो वो पैनिक नहीं करते जल्दी. अदरवाइज Yeah. नैनो जैसा डिजास्टर हो तो आदमी वहीं रिटायर हो जाता है. ये बंदा चलता रहा. टाटा डोकोमो पिट गया, कोई नहीं कुछ और करे. वो 90 साल का हो गया, वो आज भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहा है. And his best friend is a 20-something-year-old. Oh, that's his assistant. That's such a beautiful thing, right? Yeah. Yeah. So that is how these people, and you will see Ratan Tata all over the place. Yeah. Look at his travel schedule. It's still crazy. वो असम तक Yeah. चला गया आदमी, पीता काट 90 साल की उम्र में. Absolutely brilliant. Yeah. और कौन से, if you look at the film industry, who's Sagittarius moon? I don't know. I am not a big fan of film industry or politician chats. Most of them are fake. Okay, they Yeah. don't want to tell their reality to the public. Politicians or film stars का आपको असल चार्ट नहीं मिलेगा. People do PhD on their charts. मैं हाथ जोड़ देता हूँ. I never. Maybe they No are problem. right. Maybe they are wrong. I don't know. I can tell you characters. Okay, but I cannot tell कि हाँ ये आदमी ऐसा कर सकता है. तो one big thing जो हमने सीखा Sagittarius moon का, that is positivity, ultimate positivity. You can't keep these people down. They will bounce back. They will bounce back. Or they will always go for the impossible. Idealistic होते हैं थोड़ा. You know, अगला बंगाल में फैक्ट्री खोलने चला गया. Nobody else would have done that. Right? और वहां पे फ्लॉप हो गया तो गुजरात में फैक्ट्री खोल के माना. Absolutely. अब तीसरा कौन होगा बढ़िया मून वाला? तीसरा बढ़िया मून, I personally like a Virgo moon. Virgo moon, okay. Capricorn moon people, I've seen them very successful in life, but they are a little prone to depression.
वर्गो मून मैंने उनको देखा है कि ये सबसे बैलेंस्ड लोग होते हैं. They normally do not throw a tantrum. They're pretty calm. And Virgo is the sign of balance. लोग लिब्रा को बोलते हैं, मैं समझता हूँ वर्गो है. वर्गो की मेहनत है जो लिब्रा में दिखती है. So they are able to surgically manage their emotions. वो टॉरस जितना स्टडी नहीं है, वो उतने बल्ले बल्ले भी नहीं है जितना सेजिटेरियस है. बट दे आर वेरी लॉजिकल पीपल. दे आर वेरी लॉजिकल पीपल. तुम इनको कभी भी कलेश डालते नहीं पाओगे until unless they have a heavy राह. हाँ, और ये बैंकर्स भी मिलेंगे फिर इस Yes, लॉजिक से, yes, yes, राइट? yes. लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड. Lot of नाउ bankers. दिस मेक्स सेंस बिकॉज़ दे हैव टू स्टे काम, दे हैव टू स्टे लॉजिकल. कैप्रिकॉर्न मून आपको बाहर से लगेगा बट वो अंदर से खुद को कोड़े मारता रहता है. So that is why I'm not very fond of Capricorn Moon. Otherwise, you will find a Capri Moon in chart of very successful people. But in my view, how you live defines success. How much money you have, that doesn't define success after a point. I would like to share one thing if you permit. Okay. And that's the root cause of a lot of people's depression nowadays. Yeah, please. सब लोग जो है ना, ये सोशल मीडिया इज लाइक 90% राहु, 5% शुक्र बुध. So sir, please sort of explain kariye why Rahu and Shukra, if you allow me to, from whatever little I've learned from you. Yeah. So Rahu is all sort of technology. Yeah. And media is Shukra, okay, and Buddha is communication. So Venus. Yes. I think लोग थोड़ा समझ जाएं. Venus is Shukra. Yeah. लोग समझ जाएंगे दिव्या, तुम्हें मैं तो सीख जाऊंगी हिंदी ना. Good. Since you are learning. Buddha is बुद्धि, Mercury. Mercury, शाबाश मेरा बच्चा. So Shukra is also show off. Shukra is luxury. Okay. Rahu is छलावा. राहु इज दिखावा. राहु जब सामने आएगा 80% टाइम शुक्र का मुखौटा लगा के आएगा. दिस इज व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. वो शुक्र बन के एंट्री मारेगा. ओके. और कहां शुक्र का बॉर्डर खत्म, कहां राहु का शुरू, वो आदमी को पता नहीं लगता. बिल्कुल. तुम दिल्ली में बैठे हो, पहले 2 दिन तक शुक्र होता, तीसरे से राहु आवा शुरू हो जाता. राइट. सिमिलरली so Rahu is excess, Rahu is दिखावा, झूठ, छलावा. फेक इट टिल यू मेक इट. सोशल मीडिया पे फेकरी बहुत है ना. तुम्हारे किसी फ्रेंड का तुम फेसबुक उठा के देख लो, वो होटल में है, यूं कर रही है, या किसी एयरपोर्ट पर पाउट दे रहे हैं, या कोई अगर चंदा करके भी दुबई गए हैं तो फॉरेन वेकेशन. लोग एयरपोर्ट से फेसबुक पे क्यों चेक इन करते हैं, मेरे समझ में नहीं आता, एक्सेप्ट फॉर शो ऑफ. होता क्या है, बाकी की जनता उनको देखती है, अरे यार ये लोग तो इतनी ऐश कर रहे हैं, मुझे भी ये करना. दूसरी चीज, आप सारे दिन क्या देखते हो, अंबानी वेडिंग, सहारा वेडिंग. अरे यार मेरी शादी में सलमान खान क्यों नहीं नाचा. अरे तुम दिलीप कुमार हो, तुम्हारी शादी में सलमान खान क्यों नाचेगा भाई. if you will look at, we middle class, upper middle class Indians, we have so much to be thankful for. 30 years ago, there was zero industry. There was a sarkari naukri or no naukri. It's all Rahu growth. Yeah. आज की डेट में you have so much to be thankful for. बिजली तो आ रही है. मैं बचपन में यूपी में रहा था, 12-12 घंटे का कट होता था. आज 1-1.5 घंटे में कलेश मचा रखा लोगों ने. हर घर में एसी है, हर घर में कार है. पहले मोहल्ले में एक कार होती थी, घरों में स्कूटर्स होते थे. So as a community, as a people, we have done so well. प्रॉब्लम क्या है, हर आदमी को लगता है कि साहब मुझे तो हेलीकॉप्टर खरीदना. कहां से खरीद पाओगे, नहीं खरीद पाओगे. दैट्स इलॉजिकल. कितने आदमी होंगे दुनिया में जो हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं. अब मिलियनियर वर्ल्ड ही बड़ा डाउन मार्केट हो गया, सबको बिलियनियर बनना. अरे भाई, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग. एंड मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास एजुकेटेड अपर मिडिल क्लास पीपल, इनकी कहानी तुम्हें खत्म होती दिखेगी एक घर और 2 गाड़ी. अपने आसपास आंखें खोल के देखो, ऑल दोस बिग कॉर्पोरेट बॉय सब ईएमआई भर रहे हैं. किसी का घर थोड़ा छोटा, किसी की गाड़ी थोड़ी बड़ी, बट मोर और लेस इतना ही है, एंड दैट्स इनफ. वंस यू आर लाइक कि भाई इतना मिल गया काफी है, आई एम हैप्पी, ये मेरी नीड हो गई. अब ग्रीड का तो कोई अंत है नहीं, बट आई एम थैंकफुल दैट माय नीड्स हैव बीन मेट. अब आज तुम्हारा हम एसी में बैठे हैं, कार में चलते हैं. So ये वही Rahu is playing its own magic, right? राहुल लाइक मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए.
कि मुझे जो है ना ये नहीं चलानी कार, मुझे बड़ी कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, अगला माला चाहिए, तो मैंने चाहिए, दैट्स राहु. So that is how Rahu is making people depressed. Once you count your blessings, Yeah. number one remedy for depression is to count your blessings and have gratitude. And that is by calming your Rahu. That way, Rahu that takes you in a place of illusions and greed and never ending desires. Yeah, yeah. तो सर लोगों का इससे people who are entrepreneurs, people who are businessmen, and moon is extremely related to that, because if you're not mentally healthy, there's nothing more you can do, right? तो उनका एक सवाल रहता है कि ग्रीड और एम्बिशन की लाइन कहाँ ब्लर और सेपरेट होती है? कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ. What you call ambition is greed in a corporate suit. ग्रीड नाम की एक चुड़ैल थी, लाल आंखें, हाथ में मोमबत्ती, बाल बिखरे हुए, साड़ी पहन के. आपने उसको क्या किया, आपने उसके पकड़ के जो है ना कटिंग करा दी, कॉर्पोरेट सूट बना दिया, मोमबत्ती की जगह आईपैड दे दिया, और वो रेबैन का चश्मा लगा दिया, उसका नाम रख दिया एम्बिशन. तो फिर क्या करे? एक गाड़ी, दो गाड़ी, एक घर में खुश रहे लोग? Hold on, let me come to that. Okay. इट्स द सेम थिंग. ठीक है, वो वही चुड़ैल है, बस भेस बदल के आ गई. ठीक है, तो हमने हिंदुस्तानियों ने बड़ा ग्लोरीफाई कर दिया एम्बिशन वर्ड को. व्हेन यू से आई एम वेरी ग्रीडी, हो कितना गंदा बच्चा, यू से आई एम वेरी एम्बिशियस, ओहो जी बल्ले बल्ले. इट्स द सेम थिंग. एम्बिशन का देखो, लाइफ इज नॉट मेड ऑफ मनी, लाइफ इज मेड ऑफ टाइम. मैं चाहता हूं ये हर ऑफिस, हर स्कूल की दीवार पे लिखा हुआ चीज. गिव मी अ गुड टाइम, आई डोंट केयर इफ आई डाई अ मिलियनियर और नॉट. ठीक है, कुछ लोगों को मजा आता है ये करने में. ठीक है, सम पीपल एंजॉय बिल्डिंग बिजनेसेस, हैवी सन और हैवी कैप्रिकॉर्न. ठीक है, रतन टाटा इज नॉट डूइंग इट आउट ऑफ एम्बिशन, ही लव्स द गेम. सो अगर तुम खेल इसलिए खेल रहे हो कि मुझे जीतना है, देन यू आर इन ट्रबल, तब तुम डिप्रेशन के शिकार. खेल इसलिए खेल रहे हो, खेल में मजा आता है, तब तुम कामयाब हो. बस अब आपने ग्रीड और एम्बिशन का रेफरेंस अब बता दिया. ठीक है ना, तो इफ यू एंजॉय व्हाट यू डू, माय कॉर्पोरेट जॉब पेड वेल, माय लाइफ वाज मिजरेबल. I used to get. I hope your bosses are not listening to this. I don't care. I don't work under them. Most of my bosses were good, barring the last 2 years. तब मुझे एक से एक शानदार लोग मिले. One guy was, one or two of them were very very nice, but I ended up in a very political city, so क्या कर सकता. But अब वो हालात ऐसे, तो कुछ उनकी भी गलती नहीं, कई बार होता. But I ended up in a hospital with heart palpitations. You were in Ketu Dasha. Yes, yes. What is to be blamed? Let's put all the blame on your Dasha for now. No, it's my karma. It's not Ketu, it's my karma. But the day I was like, screw this, ऐसे नहीं जीना. मैं थोड़ा अपनी लाइफस्टाइल डाउनग्रेड कर लूंगा, but this is not how I want to live. So I took that call and here I am. मैं आज चाहूं तो 4 और चीजें फैला लूं. I don't. I'm enjoying this discussion. Give me a good time in life. I would rather be middle class doing what I love instead of being rich doing what I hate. Absolutely. यही लोग समझते नहीं. हर आदमी इंजीनियर है हिंदुस्तान में सर. 12 का पढ़ाना नहीं आता होगा, 75% को इंजीनियर बनेगा. They hate science. I hated science. तो now I'm going to sum this up. तो अच्छे मून को, now this was really interesting. अच्छे मून को और अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? ओके, सबसे पहली चीज 3 pointers please. only. Gratitude. Okay. Number 1 remedy for Moon and Rahu, count your blessings, have an attitude of gratitude. इससे ऊपर कुछ नहीं. Second thing, be nice to children. गरीब बच्चों में कुछ खाना वगैरह बांट दो. And why is that? Moon is the ruler of children. बच्चों की दुआ लगी तो मून खुश हो गया. Okay. So I can go on and on, but तुम the third point मारोगे, so I'll go to the third point. तीसरी चीज, doing the moon mantra. I've seen that does wonders. मतलब मेरा माथा शांत रखने के लिए that's one mantra which I do almost daily. और साल में एक बार इसकी 11,000 की साधना करता हूँ सुबह से रात तक बैठकर. अब कैसे बोल सकते हैं उसको? ओम सोम सोमाय नमः. ओके, वेरी सिंपल. डेली 108 कर लो, वरना 11,000 की साधना होती है, मेरे वेबसाइट पे है. एंड वन लास्ट एक्स्ट्रा टिप इज रुद्राभिषेक पूजा. ओके, या दैट्स इट. ओके, perfect.
So number one is gratitude. Number two is गरीब बच्चों की मदद करना because moon rules children. Number three is Om Som Samay Nama moon mantra. And number four would be Rudrabhishek. या And किसी भी शिव मंदिर में किसी अच्छे पंडित से करवाएं, अच्छा बिल्कुल. And रहेगा. Shiv Puja anyway is great. It's the Great biggest for Rahu healer which I've personally done. भाई और चंद्रमा तो शिव जी माथे पे लगा घूमते हैं ना. हाँ, वो एक हम डिस्कशन अगले उसमें करेंगे. And it wasn't क्योंकि just Chandrama, it wasn't just Rahu for you, it was Rahu plus Chandrama for you. So we'll have that discussion. for him. For you. Oh, तुम्हारा my dasha. रुद्राभिषेक, Yeah, of course. We're right? gonna. Oh, there are lots Wow. of people I know who are suffering Rahu Moon. We have to do a full episode on Rahu Moon. Absolutely, absolutely. And I'll probably, you'll probably interview me then. Yeah. Perfect, sir. Thank you so much for your time. Had a lovely time, and I hope सबको बहुत मजा आए moon के बारे में जानकर. We'll do part 2 of a not such a great moon, but that'll be a little later. लोगों को थोड़ा अच्छा side enjoy करने देते हैं पहले. Bright side of the moon तो होना चाहिए. Yeah, absolutely. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you.